Minister Modi will inaugurate and lay the foundation stone of 84 major developmental projects that are worth more than around rupees 1,500 crores. Now, during the visit, the Prime Minister will participate in the Empowering Youth Transforming J&K event at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre in Srinagar. This is the PM's first visit to the state after being elected for the third time, and it coincides with the International Yoga Day event as well. The Prime Minister will be participating in this event that will also be held at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre. Meanwhile, viewers, security has been heightened in the region and a multi-tier arrangement has been implemented with high alert protocols in place. My colleague Ajay Chandya joins us live on the broadcast with more details. Ajay, all eyes on Prime Minister Modi's visit today in Jammu and Kashmir. First, take our viewers through what exactly he's going to be doing, what exactly is his itinerary over the next 2 days, and secondly, also take our viewers through the security arrangements in place. Well, yes, you rightly said, and definitely the nation, not only the nation, but the world, would be eyeing on Prime Minister Narendra Modi's this visit to Jammu and Kashmir. And as per my knowledge, I think this is going to be the first visit of Prime Minister when he is going to stay there in the Kashmir after he becomes the Prime Minister of country. And third time after he took over as the Prime Minister of country, he's going to coming here for the Kashmir Valley for the first time for two major functions. First would be that he's going to inaugurate and lay down the foundation stone of 1,500 crore project, which will definitely help the people of Jammu and Kashmir to grow with the rest of the country. The way basically the work has started in last few years, that is something which is definitely history like situation in the Kashmir, because the people of Kashmir have seen unrest, stone pelting, band calls, and whenever any VVIP visit was taking place over here in the Kashmir Valley, most of the time the cities, towns remain shut because of the terror threat. But this time, after the application of 370, the change has happened, and what we have seen that there will be no shutdown calls, there will be no stone pelting and other things over there, and people will be able to go definitely and participate with Prime Minister Narendra Modi's Yoga Day function as well. Thousands of people are expected to join him for the yoga at the bank of Dal Lake, and definitely it is going to be a memorable day for people of country as well, and Prime Minister too. Other than that, today evening at around 6, he is going to participate in a major function in which he is going to lay down as well as inaugurate the 1,500 crore projects which was started or going to start here in the Jammu and Kashmir as far as the agricultural sector is concerned, other than the road network and other things which basically are going on over here in the Jammu and Kashmir. Other than that, he is also going to distribute the appointment letters to the youngsters of the Jammu and Kashmir, those who basically is going to get job here in Jammu and Kashmir. And this is definitely going to happen from today evening, as he's expected to arrive here at around 5:30, and then he will stay here till tomorrow. So definitely adequate security measures are put in place by the authorities. Jammu and Kashmir Police, CRPF, other paramilitary forces and defense forces will be here for 6-layer security system to ensure that there will be no untoward incident. As we know that Pakistan is continuously trying to disturb peace over here in the Jammu and Kashmir. Two terror encounter took place there in the Kashmir Valley, in which 4 terrorists, including 2 Pakistani terrorists yesterday, were killed in the encounter, and they were expected, to disturb peace over here there in the Kashmir Valley. But on-time action of the forces have foiled this attempt of terrorists. Other than that, all over Jammu and Kashmir, high alert has been sounded, because we know that how Pakistan could try to once again play its dirty game of bloodshed here in the Jammu and Kashmir. So that's why district police officials as well as other paramilitary forces have been told to be on the alert to foil all the nefarious plan of Pakistan. All right, Ajay, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast live, sharing all those details. Meanwhile, Ashik Mir, my other colleague in Jammu and Kashmir, has, of course, filed a ground report from the Dal Lake. He's, in fact, taken our viewers to what exactly the security situation looks like on the ground. Let's take a sneak peek. इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर के डल झील के किनारे के बिल्कुल पास में, और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आज श्रीनगर आ रहे हैं। कल जो है वो श्रीनगर के SKIC में
योग समारोह में शामिल रहेंगे। इस हवाले से श्रीनगर शहर में पूरी अरेंजमेंट्स की गई है। अगर हम सिक्योरिटी लिहाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसपीजी के जवान जो है पूरे श्रीनगर में तैनात रखे गए हैं। साथ साथ मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं जो डल झील की तस्वीरें हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर जो है कल 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर यहीं पर योग दिवस मनाएंगे। श्रीनगर के SKICC जो कि डल झील के किनारे पर वाक़ा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लगभग 8,000 से लेकर 10,000 एथलीट्स, स्टूडेंट्स के साथ योग दिवस में शामिल रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आज के दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े समारोह को कश्मीर में संबोधित करने जा रहे हैं और साथ साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है आज श्रीनगर 6 बजे शाम के पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई सारे अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है इनकी इनॉग्रेशन भी होने जा रही है। और कल जो है SKICC में लगभग 8,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स, एथलीट्स योग दिवस में शामिल रहेंगे। कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कई सारे बच्चों से हमने बात की जो प्राइम मिनिस्टर की इस योग दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बच्चों का कहना था कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री आज कश्मीर में आ रहे हैं और साथ साथ योग समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर के मशहूर डल झील के किनारे पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और रिवर पुलिस के साथ साथ एसपीजी के जवान जो है पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी की टीम जो है वो ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुकी थी कुछ दिन पहले ही और SKICC के इर्द गिर्द एसपीजी के जवान तैनात रखे गए हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, साथ साथ रिवर पुलिस, SDRF की टीम जो है डल झील के किनारे पर इस वक्त तैनात रखी गई है। श्रीनगर डल झील से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ X के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.